Portfolio Risk Analysis Part 3, Financial Management Module 134. हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं पोर्टफोलियो रिस्क एनालिसिस की, और हमने पिछले मॉड्यूल के अंदर देखा कि पोर्टफोलियो का रिस्क कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इसके अंदर हमने जो दो अहम चीज़ें देखी वो कोरिलेशन अमंग द स्टॉक्स एंड रिजल्टेंटली द कोवेरिएशन अमंग्स द टू स्टॉक्स। और हमने एक ग्रिड, जैसी कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है, इससे मिलती जुलती एक सिंपलर वर्जन ऑफ दैट ग्रिड वी सॉ अर्लियर इन द मॉड्यूल। जो अहम बात हमने पहले डिस्कस की थी उसको दोहराते चलें कि पोर्टफोलियो का रिस्क हमेशा इंडिविजुअल स्टॉक्स के एवरेज रिस्क से कम हुआ करता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह उनके दरमियान जो कोरिलेशन पाया जाता है उसका एब्सोल्यूट ना होना है। एंड हाउ डू वी शो इट? बाय कंसिडरिंग द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट, दैट इज रो। रो की वैल्यू जब भी +1 से कम होगी, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, हमारे पोर्टफोलियो का रिस्क हमेशा इंडिविजुअल स्टॉक्स के रिस्क से कम होगा। इस मॉड्यूल में हम अपनी उस डिस्कशन को आगे लेके चल रहे हैं कि अगर एक इन्वेस्टर अपने पोर्टफोलियो के अंदर डाइवर्सिफिकेशन को बढ़ा देता है, यानी अगर वो मजीद स्टॉक्स, मजीद शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल करता चला जाता है, तो उससे उसके रिस्क पर क्या असर पड़ता है। मीनिंग दैट इफ अ पोर्टफोलियो इज मोर डाइवर्सिफाइड, would it have a higher rate of risk or lesser? The answer is that more diversified is a portfolio, lesser will be the risk of that portfolio. इस बेसिक कंक्लूजन के साथ हम ये देखते हैं कि अगर 3 स्टॉक्स, 3 शेयर्स का पोर्टफोलियो हो तो उसके दरमियान कोवेरियंस और उस पोर्टफोलियो के रिस्क को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। But before we start our discussion, let's keep in our mind one thing, that it is exactly the same calculation that we did with the 2 stocks. The only thing is that we have expanded this discussion a little, this calculation a little more. यानी हमने सिर्फ ये किया है कि इस ग्रिड में एक और स्टॉक को शामिल कर लिया है। तो अब सिर्फ स्टॉक ए और बी की आपस में कोरिलेशन और कोवेरियंस नहीं देखा जाएगा, बल्कि स्टॉक ए का स्टॉक ए के साथ, स्टॉक बी के साथ और स्टॉक सी के साथ भी कोवेरियंस देखा जाएगा। इसी तरह स्टॉक बी का स्टॉक ए के साथ, उसके अपने साथ और स्टॉक सी के साथ वेरिएशन देखा जाएगा। तो अगर हम इस ग्रिड को, इस टेबल को थोड़ा सा एनालाइज करें तो हम देखते हैं कि हमारे पास फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डायगोनली अगर हम नीचे की तरफ जाएं तो बॉक्सेस में हर स्टॉक की उसके अपने साथ कोरिलेशन और उसके नतीजे में पैदा होने वाला कोवेरियंस नजर आता है। यानी कोवेरियंस ऑफ ए एंड ए, इन द मिडल वी हैव गॉट कोवेरियंस ऑफ बी विद बी, एंड इन द राइट बॉटम box we have got covariance of C with C. And let's have a look at the other boxes. Like you consider the first box in the second column under stock B, we can say that it is showing the covariance of stock A with stock B. And there is another box in the column of stock A in front of the row stock B, which is also showing the covariance of A and B. इसी तरह हमारे पास 2 बॉक्सेस हैं जो स्टॉक ए और स्टॉक सी के कोवेरियंस को शो करते हैं, और 2 बॉक्सेस ऐसे हैं कि जो स्टॉक बी और स्टॉक सी के कोवेरियंस को शो करते हैं। बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, लेट्स हैव अ लुक एट द सेम ग्रिड, बट नाउ वी हैव पुट डाउन द वैल्यूज और द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेशन ऑफ दिस कोवेरियंस। अगर हम इसका एनालिसिस करें तो ये वही फॉर्मूला है कोवेरियंस का जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं स्टॉक ए के कॉलम के नीचे और स्टॉक सी के सामने देखूं तो इसके अंदर जो फॉर्मूला है वो ये कहता है कि वी हैव टू मल्टीप्लाई द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्टॉक ए विद द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्टॉक सी, एंड देन इट हैज टू बी मल्टीप्लाइड
by the value of correlation coefficient rho which is between E and C. A and C यानी हम ये कहते हैं कि वो वेरिएशन जो है वो +1 से कुछ कम होगी यानी 0.6, 0.5, 0.4, इसलिए इससे इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू बदल जाएगी. XA and XC are the percentages of investment in stock A and stock C. यानी अगर हमारे पास 3 स्टॉक्स हैं और हम सपोज करें कि हमारे पास $100,000 हैं और उसमें से $20,000 हमने A में इन्वेस्ट कर दिए तो 20% ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट हैज़ गॉन इन स्टॉक ए. और अगर हमने $50,000 स्टॉक B में लगा दिए तो इसका मतलब 50% ऑफ द इन्वेस्टमेंट हैज़ गॉन इन स्टॉक B. तो स्टॉक A की वैल्यू 20% या 0.2 और XA की वैल्यू यही ली जाएगी. XB की वैल्यू 50% या 0.5 ली जाएगी. और इसी तरह इन तमाम बॉक्सेस के अंदर हम ये वैल्यूज पुट इन करते चले जाएंगे. So you can see that to make the calculations, what data do we need? We need the values of individual risks, that is the standard deviation or the sigma value of stock A, B and C, number 1. Number 2, we need the correlation coefficient rho's value between stock A and B, stock A and C and stock B and C. And finally, we also need the amount of investment or percentage of investment in stock A, B and C. Let's have a look at the equation. Equation of the risk of this portfolio containing 3 different stocks. And if we compare it, if you can recall the equation of a portfolio with 2 stocks, you would see that it is a little more complicated than the first equation. सिर्फ इसके अंदर थोड़ी सी मज़ीद डिटेल हमारे पास है, लेकिन in its nature it is the same equation. For example, the first 2 components, sigma A square, XA square and sigma B square, XB square are the same. But because we have got the third stock which is C, so we have got another component which is sigma C square X C square. And because of the covariances of these stocks, we do not have only 2 identical boxes, but we have got 6 identical boxes. तो आप इस इक्वेशन में देख सकते हैं कि हमारे पास 2 identical boxes जो कि A और B की correlation से related है, उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और इसी तरह A और C की कोवेरियंस को भी 2 दफ़ा ले लिया और B और C के कोवेरियंस को भी 2 दफ़ा ले लिया. So to conclude our discussion on this topic in this module, we would say that by combining all the covariances of the stocks with each other and summing them together, we get the covariance of that the variation of that portfolio. यानी नतीजे में हमारे पास वो variance की value आ जाती है. And that variance is then converted into standard deviation or the sigma or the risk of that portfolio by taking the square root of it. And again, to say that this answer, this result or this value of individual risk, this portfolio's risk will definitely be less than the average risk of the 3 stocks of the portfolio.